کہ فائنانس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پریمیم. پریمیم سمجھتے ہیں؟ پریمیم ایک بزنس میں عام ٹرم ہے. پریمیم پے جو کرتے ہیں نہیں، خاص لمٹ سے اوپر وہ ایک باؤنڈری رکھ دیتے ہیں. یعنی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج. پریمیم اگر نیگیٹو ہے تو پھر وہ نیگیٹو پریمیم ہے، لاس ہے، کیپٹل لاس، کیپٹل گین. تو اب اس کو کمپیئر کرنا چاہیے. یہ دیکھیں میل اور میل فرام اربن، میل بھی ہے اینڈ ہی آلسو بلانگس ٹو اربن. تو ایک پریمیم افیکٹ. سر یعنی تینوں ویریبلز ڈمی، ہاں یہاں تو یہ دونوں جو ملٹیپلائی کیے گئے ہیں دونوں ڈمی. اربن اور میل بھی تو الگ الگ، وہ بھی ڈمی ہے، وہ تو ڈمی ہے. ہاں یہ دونوں بھی ڈمی. لیکن انٹریکشن ہم پہلی دفعہ لے رہے ہیں. انٹریکشن دو ڈمی کی پہلی دفعہ. پہلے جتنے کیے جیسے آئی کیو اور میل کو کیا تھا تو آئی کیو کوالیٹیٹیو نہیں تھا. تو یہ آپ کو یہ بتانا ہے، کانفیڈنس دینا ہے کہ دس کین آلسو ہیپن اینڈ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ اف دیر از اے نیڈ. یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بہت سارے تھیسز میں یہ بچے کیونکہ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں آتی تو وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں انٹرپریٹیشن میں، میننگس نکالنے میں. پھر ان کو ماڈل ان کو صحیح طور پہ بنانا اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ وہ اسٹیٹس ویک ہوتی ہے اس لیے ہونے. مارکیٹنگ میں بھی اسی طرح ہے، فائنانس میں بھی دیکھا جائے تو اور جو ہے لوگ نہیں. اس میں صرف فائنینس میں تو ڈمی ویریبلس کم ہی یوز ہوتے ہیں. کیوں کم ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. ایک آپ مطلب جیسے میں نے اونرشپ اسٹرکچر کیا تھا تو یا تو ہے ہاں یس انوملیز جتنی ہیں ساری وہ بھی ہوتے. انوملیز کو کیسے پروو کریں؟ ایونٹ انالیسس جو تھا، ہاں ایونٹ انالیسس بھی انڈسٹری اسپیسیفک فیکٹرز. انڈسٹری اسپیسیفک اتنا بڑا لکھا ہوا ہے. کل بھی ایک تھیسس ڈیفینسر اتنا بڑا اس نے نیکسس ڈائنامکس اتنے ہیوی ورڈ ٹائٹل میں یوز کیا. میں نے اس کو صرف یہاں سے اسٹارٹ کیا. میں نے مجھے بتا دیں نیکسس کہاں پہ ہے اس تھیسس میں اور ڈائنامک آپ کس کو پروو کر رہے ہیں. اور لگی رہی بیچاری تو وہ جو کوالٹیٹیو تھا فیملی میں تھی تو بڑی ٹربل میں. پھر میں بٹھا دیا اس کو. ڈائنامک اتنا بڑا ورڈ ڈائنامک کیوں لکھا ہے؟ کہتی یہ ڈائنامک ہے نا، میں نے 4-5 کنٹریز کو لیا ہے تو یہ ڈائنامک انالیسس. میں نے کہا وہ پتہ ہے ڈائنامک کی، یہ یاد رکھیں ڈائنامک انالیسس تھیسس کے اندر ٹائم بیسڈ انالیسس ہوتا ہے. ٹائم بیس سارے ماڈل ڈائنامک ماڈل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے تھیسس کے اندر ریسرچ کے اندر ایسا کوئی ہے ہی نہیں انالیسس مت لکھیں ڈائنامک. صرف ڈائنامک وہ تو نہیں ہے کہ ورڈ آپ نے کہ آپ بہت ڈائنامک آدمی ہیں. ٹھیک ہے، تو پلیز اسی طرح جو آپ کرتے ہیں نا T1 T2 T3 کی بیس پہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں HR میں، مارکیٹنگ میں انالیسس ہوتا ہے، اس کو ڈائنامک کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹائم اتنا لمیٹڈ رکھ کے کر رہے ہیں HR میں تو 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ اس سے کویسچنئر فل کروا رہے ہیں. ہوتا ہے نا یہ جیسے پھر T1 پہ یہ کیا، T2 پہ یہ کیا، T3 پہ یہ کیا. 15 دن میں کیا ایسی چینج آ جاتی ہے ایک ریسپانس کے اندر، ایک بندے کے اندر، جس سے آپ لیتے ہیں. صرف کھانا پوری والی بات ہوتی ہے. جی ریسرچ کی بہت ساری چیزیں ہیں گریجولی امپروو کرنے والی. ہاں سر دیکھیے اب ہم نے ٹائم سیریز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جو مجھے سمجھ آئی ٹائم سیریز انالیسس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائنامک ہو سکتا ہے. یہ جو مجھے سمجھ آئی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو سر ٹائم سیریز آپ ڈائنامک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم سیریز کی اپنی ڈائنامکس ہے جو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں نا. وہ چیز آپ اور بات کر رہے اچھا ہیں ڈائنامکس ہے بہت چیز. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں ایک جن سب کے لیے یاد رکھیں. یہ ڈسکشن ہم اس لیے کر رہے ہیں ایک تیسرا ٹاپک ہے جو آرٹیکل
کہ کیا ڈائنامک انالیسس میں ایکولیبریم ہو سکتا ہے ماڈل میں. ایکولیبریم اسٹیج کوئی آ سکتی ہے کہ ایکولیبریم آپ کہیں کہ دس از دا ایکولیبریم پوائنٹ جس پہ ڈی بی آئی بی کا ایک پوائنٹ پہ ہم نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا. وہ ٹارگیٹ کون ڈیفائن کرے؟ ایکولیبریم جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی 5% امپلائمنٹ لیول پہ لے کے جانا ہے اکانومی کو. اب بہت سارے فیکٹرز ہیں پالیسی سے ریلیٹڈ, تو اس کا ڈائنامک انالیسس. اچھا ٹھیک سر. تو وہ 5% کو ایکولیبریم اچیو ہوگا ڈائنامک انالیسس فار شارٹ ٹائم پیریڈ میں بھی سر, اگر وہ باقی سارے کانسٹنٹ ہو جائیں اور وہ ایک تو شاید وہ بھی پھر ایکولیبریم پہ آ جائیں. بٹ ضروری تو نہیں سر, اکنامکس اس طرح تو نہیں ہے. میرے ہاتھ میں خارش بہت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا ڈفرینس اور ڈفرینشیل ایکویشن پڑھائی ہے مشکل ہو. سیکنڈ ایئر میں پڑھی تھی ڈی وائی بائی ڈی ایکس اور وہ ڈفرینسیشن ہے سر, میں نہیں پڑھی سر. دیکھیں جو ڈائنامک انالیسس ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن جس میں دو ایکولیبریم کا کانسیپٹ ہے. ایک ہے پرٹیکولر سولوشن جس کو ہم ایک اسٹیٹک ایکولیبریم ڈیفائن کر دیتے ہیں ٹارگیٹ. ایک ہے جنرل سولوشن. پرٹیکولر سولوشن, جنرل سولوشن. جنرل سولوشن میں آپ دیکھیں یہ ڈائنامک انالیسس آ رہا ہے اس کے اراؤنڈ ہے. ڈائنامک انالیسس میں آپ جتنے مثلاً میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک امپلائمنٹ لیول ٹارگیٹ رکھا ہے 5 سال میں ہم نے کرنا ہے. 5 سال میں پچھلی ہسٹری ہمارے مائکرو ویریبل, لیبر مارکیٹ کے ویریبلس اور بہت سارے جو ہم انڈسٹری لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ سارے کہ جی یہ لگائیں گے تو امپلائمنٹ بڑھے گا. اس دوران بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹارگیٹ سے ہٹتے ہیں, پھر ٹھیک کرتے ہیں اگلے سال, پھر ٹارگیٹ کی طرف آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں, جو پالیسیز آپ کر رہے ہیں, وہ آپ کو ٹارگیٹ سے ایسے فلکچویشن کرتے ہوئے آپ کو ٹارگیٹ کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ موو کر رہے ہیں ٹارگیٹ کی طرف کہ نہیں. ٹھیک سر. اس کو ڈائنامک انالیسس کہتے ہیں. فار ایگزامپل تو پھر اس میں ایکولیبریم ایگزسٹ نہیں کرتا سر؟ نہیں, صرف ڈائریکشن آپ دیکھیں گے کہ کنورجنس کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں. ایگزیکٹ 5% آپ کو کیسے ملے گا اگر یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ سارے تو ہاں سر آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے, آپ انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں whether they are moving towards a particular solution. What is particular solution? Your target. So if the system, the policy variables are leading towards the solution value, ان کی ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں کہ ادھر ہی جا رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ the system will converge to equilibrium. Exact solution value نہیں. یہ جسنا فائنانس میں یہ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں ویکٹر ایرر کریکشن ماڈل, امپلس رسپانس فنکشن, VAR, VECM, یہ سارے ڈائنامک ماڈل جو ڈائیگرام بناتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ سارے ایک پوائنٹ پہ جا کے ایک پوائنٹ تو نہیں, وہ تو کنورجنس ہوتی ہے. ایک کنسیپٹ چوز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں میتھمیٹکس میں ایسمپٹوٹک, ASYMPTOTIC, ایسمپٹوٹک. یہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کا جو گراف ہے, جو لائن ہے, وہ نیچے آپ ایک ٹارگیٹ کی طرف, آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے, اس کی طرف موو کر رہی ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی اس کو ٹچ کرے گی, بٹ اٹ نیور ڈز سو. ایسے فنکشن ہو جاتا ہے ایسمپٹوٹک. تو ڈائنامک انالیسس کی یہ خوبی ہے. کافی ہیوی ہو جائے گا. فائنانس کے اسٹوڈنٹ اچھے چڑھے تو کے ساتھ
चलें सॉरी मैंने आपका टाइम ये कर लिया जल्दी से बड़ा ये एक मॉडल नहीं है Definitely you have estimated one model, but you can generate multiple models. जिस तरह हमने last time करके मैंने आपको दिखाया था board पे, जी by substituting the values, codes, so you can draw the you can draw the subset of the models for other categories. For different categories, you can generate the models. तो ये इसका एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। तो पहले वीडियो सुन लें तो वो ज़रा आसान होगा, फिर हम थोड़ा इसी से ही आपको समझाऊंगा कि एक मॉडल भी अगर आप एस्टिमेट कर लें फिर इनफैक्ट यू हैव एस्टिमेटेड मल्टीपल मॉडल्स, वो मल्टीपल मॉडल कैसे इससे निकालें इस डिस्कशन में तो नहीं होगा, वीडियो में नहीं मैंने किया था, वो समझा वो भी मैं आपको समझा दूँगा बहुत है ना। Welcome again to the second part of the video. In this part of the lecture, we'll be discussing again the dummy variable associated model. Now this time we will be discussing model 2, which includes wages as a quantitative variable and a dependent variable. On the right hand side of the equation, education categories, same as we discussed in video number 1, but here this time we have included urban variable. The value of urban is equal to 1 if the worker belongs to the urban area, and 0 is assigned to those who belong to the rural areas. Male 1 for male workers and 0 otherwise for the female. And this time we are actually we have innovated in the sense that we have included the product of two dummy variables. One is male, okay, which is coded 01, and urban, which is coded 01. Now this model, we are using the same sample size 935 from Stephen and our book, and this data actually comes along the book. So the data which we are using, but the models are estimated differently. They are not the same as in the textbook. So now how the estimation is done, we estimate the model using GAIN. This is our model number 2, which I have estimated, and the estimation technique is when you press quick estimate and you need to select the model, you need to select the variable. But for the product form, you need to put status in between the two variables, the product of which is required for the purpose of analysis. Well, this is how the model has been estimated, and these results have been copied here in front of you. I will be discussing the results, their interpretation and practical implication, and what general learning outcome or the insights can be drawn with the help of these results. Now, if
if you look at these results, starting from again the value of the here again education 1, EDUC 1 does not appear here, which is used as a reference category, and EDUC 1 is the lowest level of education, that is primary education. The interpretation of the coefficients, if we go by the educational levels, wages for individuals with only primary education are the baseline, and that is reported as the intercept of the model. The intercept of the model, as is obvious from the results, you can see. If we look at the education category number 2, which is the secondary education, the coefficient value is 18.915, indicates that individuals with secondary education are slightly more than those with the primary education, but the difference is not statistically significant. That is why I have not added, so I will not be discussing more the results, the education category number 2. When it comes to the education category number 3, with the BS level or the undergrad level, the coefficient is 98.0795, which clearly indicates that individuals with the bachelor's degree earn $98.08 or units more than those with the primary education. The difference is statistically significant, therefore the results are generalizable. Education category 4, which is the highest education category in our analysis, MSc and the higher level, the coefficient of this EDUC 4 is 184.1308. That clearly indicates that individuals with the master's degree or higher earn 184.13 units or dollars, to be more specific, more than those with the primary education. Again, the results are significant and the results are generalizable. And when we look at the coefficient of urban variable, which is the locational variable, since rural is used as a reference category, the coefficient of urban is 51.2450, which suggests that the urban employees earn 51.25, rounding it off, 51.25 units more than the rural employees. Holding other factors constant, this difference is again statistically significant at 5% because the probability value is 0.0441. Look at the coefficient of male gender, which is gender. The coefficient value is 429.264, indicating that males earn 429.27 units or dollars more than females on the average. This is highly statistically significant because the probability is 0.001. Urban and male product, which is the interaction term, the coefficient of this interaction term is 74.8415, that clearly represents the additional wage premium for males living in urban areas. I repeat, the coefficient 74.8415 represents the additional wage premium for males in the urban area, from the urban areas. However, this interaction is not statistically significant, otherwise we could have discussed it in more detail. Meaning, we cannot conclude a meaningful wage difference due to this combination of male and the urban area. Model fitness, look at the adjusted R-square, which is 0.4572. Adjusted R-square clearly indicates that 45.72% of the variation in wages is explained by the independent variables included in the model, and the remaining 55 or 54 point some percent point are explained variation of wages due to some other factors. Look at the diagnostics, F statistic, the probability value of F is less than 5%, P is equal to 0.000. The overall model is statistically significant, meaning that the predictors or independent variables included in the model collectively influence wages.
which is the dependent variable. Durbin-Watson, though we temporarily we skip this, later on we'll be discussing is in a separate video. Standard error of the regression, which is 397.595, there is a substantial variability which is not explained by the model. What general conclusions can be drawn? The general conclusions are around education, urban residency, and the gender. A higher education level significantly increased wages with masters, and the higher degree, for example, having the strongest impact compared to the primary and the secondary education, particularly the primary education, because the reference category in this analysis is primary. The urban residency it plays a pivotal role. Urban employees earn significantly more than the rural employees, reflecting possible locational wage premium, technically speaking. So gender, males earn significantly higher wages than females, indicating a notable gender wage gap in this society. The most important outcome is urban male interaction term. The interaction term suggests a potential additional premium for urban males. Again, this is very important to learn. Interaction term suggests a potential additional premium for urban males, but it is not statistically significant, so we will not emphasize more on it. So that is the final thing, and Model 3 we will be discussing its estimation, interpretation, and practical implications in the next part of the video. Till then, thank you. Allah Hafiz. ये वीडियो भी भेज दीजिएगा। वीडियो में पैसे लगेंगे। जी, अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज था वो तो ये है कि ये जो मेल और अर्बन का कम्बिनेशन जो वेज प्रीमियम की शक्ल में मिल रहा है, पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव साइन है। तो एक मेल होना, देन मेल बिलोंगिंग टू द अर्बन एरिया, तो दैट कंट्रीब्यूट समथिंग तो इन टर्म्स ऑफ वेजेस। तो इसलिए हमने इसको वेज प्रीमियम कहा है ड्यू टू मेल फ्रॉम अर्बन, और फीमेल को ये डेफिनेटली नहीं है। अब इसको जिस तरह मैंने बताया कि ये सिंपल इंटरप्रिटेशन हमने की है, एक कैटेगरी को दूसरी से कंपेयर किया। रेफरेंस कैटेगरी इज प्राइमरी व्हेन यू आर कंपेयरिंग द एजुकेशन 3 अदर एजुकेशन कैटेगरीज, so they are to be compared with the primary level of education, उनकी अर्निंग के साथ। इसी तरह when you are discussing another dummy variable urban, then the reference point again becomes the 627, but this time it will be the average wage earning of the workers belonging to rural areas. So being urbanized is a contributing factor. It is a premium. इसलिए मैंने word premium use किया। So being urbanized, actually you can receive wage premium as compared to the workers who belong to rural areas. तो मेल का इसी तरह फीमेल के साथ कुछ कंपैरिजन हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट चला जाएगा, लेकिन मेल मल्टीप्लाई बाय अर्बन। अच्छा, ये तो सिंपल एनालिसिस हमने कह दिया, लेकिन इसका जो जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, जब आप थीसिस में ये सारा एनालिसिस करते हैं, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ये जब आप डमी वेरिएबल मॉडल एस्टिमेट कर रहे हैं, यू आर नॉट एस्टिमेटिंग सिंगल मॉडल। एक एस्टिमेटेड मॉडल से बहुत सारे मॉडल आप ड्रॉ करते हैं। दूसरा ये कि ये जब आप PhD में अब आपने एडमिशन लिया है, तो इसको सर से उतारने वाली बात नहीं है, इसके बाद तो कोई डिग्री नहीं है। तो इसको दिल लगा के आप पढ़ें, सीखें। ऐसे नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, वो काम नहीं हो सकता। वो चीज़ ना करें, आपका अपना नुकसान होगा। तो इसको थोड़ा सा फोकस करके सीखें, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मुश्किल नहीं, और इसको सीखें, ये आपके काम आएंगी ये चीज़ें। तो जिस तरह मैंने बताया कि एक यूनिवर्सिटी में
और डायरेक्टर साहब ने मुझे चैलेंज दिया कि उन्होंने कहा जी ये रिसर्च क्या है इसका। तो मैंने कहा रिसर्च का ये फ़ायदा है कि वो कुछ दिनों के लिए ना छुट्टी गए डायरेक्टर साहब, वापस आया तो जब उन्होंने मीटिंग की तो सबके साथ नाराज़ हुए। और खैर से जनरल साहब भी थे वो, तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि जी ये, मैंने कहा हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप कैंपस में नहीं हैं और अगर कैंपस में हैं तो दोनों सिचुएशन में एफिशिएंसी कहाँ बेहतर हो। वो बड़े हैरान हो गए हैं करके ठीक है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डाटा तो वो हमने फिर किया। तो बताने का मकसद ये है कि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो सर, बहुत कुछ ये बताएं ना उनकी मौजूदगी में एफिशिएंसी बेहतर थी कि गैर मौजूदगी? वो जब क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में ये कैट इज आउट तो माइस स्टार्ट डांसिंग या इस तरह की कोई अच्छा, वो पूरी नहीं आ रही। तो जब कैट इज आउट माउस स्टार्ट डांसिंग, पता नहीं इस तरह की कोई है वर्ड। तो वो उस तरह ऐसे ही होता है कि जब अच्छा अब इसकी इक्वेशन को हम ले लें ना, मैंने कहा वो ज़्यादा बेहतर है, उस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ये है जैसे सी करके ये नीचे ब्लैंक हो जाएगा तो करना आसान हो जाएगा। ये मॉडल है कंबाइन ना, ठीक है, ये कंबाइन। अब इस मॉडल को हम और फीमेल अगर निकालना चाहें सिर्फ, बाकी सारी चीज़ें उसी का, तो अब क्या करेंगे हम, जहाँ भी मेल है उसकी जगह 0 और कर देंगे, तो बिकॉज दिस इज दी प्रॉपर्टी फॉर फीमेल, ठीक है, फीमेल, क्योंकि हमारा मेन जो था वो जेंडर है, तो जेंडर को हमने नाम दे दिया मेल वेरिएबल का, कोई भी X Y Z T कोई कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो अगर ये 1 है तो 1 इज फॉर मेल और 0 है तो फॉर फीमेल। तो ये फीमेल, तो ये लॉजिक का आपके ज़हन में है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द कोड फॉर फीमेल एंड द इक्वेशन, जहाँ जहाँ भी है ये आप इसको वेज इक्वल टू 627.829 प्लस बाकी उसी तरह 18.92, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक। अच्छा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड जब कर रहा था तो मैंने SPSS के रिजल्ट थे, उसमें थोड़ा फ्रैक्शन का कोई डिफरेंस आता है, 98.04 कर लें, EDUCB प्लस 184 इसको भी शॉर्ट कर लें, 19 कर लें, ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो, प्लस 51.24 और अर्बन, और उसके बाद वो फीमेल का वो ड्रॉप हो जाएगा, दोनों ड्रॉप। तो दिस इज द मॉडल फॉर फीमेल। इसी तरह फॉर मेल अगर हम करें तो मैं यहाँ पे लिख दें इतना तक हमारे पास बहुत सारे मॉडल बनने हैं, तो हम इसको मेल के लिए करें। तो मेल when you substitute value equal to 1, so that will be equal to wage equal to 627.83 कर दूँ इसको, मैं इसको भी 83 कर दूँ, शॉर्ट हो जाएगा, स्पेस हमें मिल जाएगी। तो 18.92 EDUC2 प्लस 98.04 EDUC3
3 plus 184.19 EDUC4 plus अब आगे यहाँ पे हमने क्या रखना है, अच्छा अर्बन का उसी तरह आ जाएगा by 1.24 and मेल के लिए 1 हम रखना है तो that will be plus 429 point हम 2 decimal places तक ले रहे 27 कर लें, 1 आ जाएगा तो वो 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 वही नंबर ही आएगा, तो इसे मैं स्पेस सेविंग के लिए नहीं कर रहा। आगे आ जाएगा प्लस आपका ये नंबर जो है मेल इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट विल बी 74 पॉइंट कितना है 84 एंड फिर अर्बन। अब अर्बन 2 जगह है तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे। तो अभी मैं 3 स्टेप में मैं करूँगा ताकि आपको पता हो कि कौन सा नंबर किस में जाके ऐड हुआ है, ताकि आप ग्राफिकल उसका एनालिसिस भी कर सकें, कंपैरिजन भी कर सकें। ये कोई आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप काम पर टेंशन ना लेके बैठें। मैंने वैल्यू पुट किया, मुझे भी नहीं पता क्या निकलेगा, वैल्यू उसके साथ सपोर्ट करते हैं, सिस्टम आपको खुद गाइड करेगा कि क्या हो रहा है। तो ये 627.83 इसमें ऐड होगा जो भी नंबर कहीं रह गया, ये आएगा 429 कितना है 429.27 प्लस 80.92 EDUC2, बाकी ये उसी तरह ये 98.04 EDUC3 प्लस 184.19 EDUC4 प्लस यहाँ थोड़ी एहतियात करनी है, अर्बन कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस ये इसका नंबर 74.84 ब्रैकेट और यहाँ पे अर्बन। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये वही केस है जिसका हमने लास्ट टाइम किया था, इसका इंटरसेप्ट चेंज हो गया, साइज ऑफ इंटरसेप्ट हैज इंक्रीज्ड एंड द स्लोप हैज आल्सो इंक्रीज्ड। तो ये ट्रांसपेरेंट ये मैडम रिकॉर्डिंग कर रही हैं तो कहीं सर एन भी आएगा सर। नहीं सर अर्पण ठीक है, इधर आप बताएं, आपने मेरा चलान कर देना, मैंने गलत लिखा था। तो आप देखें आपने कितने मॉडल, अभी हमने सिर्फ मेल फीमेल को कंपेयर किया है। इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, हमारा टाइम कितना है 8:30 हो गई। एक और मॉडल भी करना है, 8:30 ऐसे ना करें, घर जाके क्या करेंगे करते हैं कुछ। तो चले इसका ये हमने कर लिया, अब लेट्स नाउ अब रूरल अर्बन कर लें एक और है और या ऐसे कर लें, वो तो उसी तरह का एक और इक्वेशन बन जाएगी, सिर्फ रूरल अर्बन को कंपेयर करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही चाह रहा हूँ कि आप मेल प्लस अर्बन का मॉडल यानी मेल बिलोंगिंग टू अर्बन एरिया का मॉडल क्या बनेगा। तो जहाँ जहाँ पे मेल है वहाँ 1, अर्बन है वहाँ पे भी 1, तो ये वेज विल बी इक्वल टू, तो ज़ाहिर है कि ये आप जहाँ पे मेल होगा वहाँ 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। मैं लिख देता हूँ
substitute male equal to 1 and urban equal to 1. ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वो जो असल मॉडल है जी। तंजीला अगर फोकस करके मुझे बताएं 627.83 लिख देता हूँ मैं, जी सर, राउंड ऑफ करके जी जी सर, 83 प्लस प्लस 18.92 ये है EDUC2 EDUC2 yes sir, plus प्लस 98.04 98.04 EDUC3 EDUC3 plus 184.19 184.19 EDUC4 EDUC4 plus plus 51.24 into 1 0.24 जी सर, into ये into 1 सर, बस 1 आ जाएगा, 1 सर, तो वो कुछ नहीं लिखते हैं जी सर, और प्लस 429.2674 into 1 तो 29.267 कर दें 27 जी सर, तो ये भी वही है प्लस आगे सर 74.8415 8415 तो 1 into 1 मल्टीप्लाई भी 1 हो जाएगा, ये मैंने सही लिखा है। ठीक है सर, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 नंबर ऐड हो जाएंगे, आपका मॉडल जो है वो जंप करेगा, इंटरसेप्ट है ना, तो वो ऊपर इससे भी ऊपर जाके शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अर्बन मेल, जिस तरह मैंने कहा कि एक वेज प्रीमियम है, स्टार्ट भी ज़्यादा होगा इंटरसेप्ट का, और आगे स्लोप कभी हम देख लेते हैं, स्लोप शायद ना चेंज हुआ हो, इसमें कोई इंटरसेप्ट कॉमन नहीं है, नहीं सर, कॉमन जहाँ पे आता है वो वहाँ पे स्लोप चेंज होता है, सब चेंज होता है, तो यहाँ पे नहीं है। तो दिस कैन बी 627.83 प्लस ये मुझे बता देंगे सारे सर 51.24 प्लस 429.27 429.27 प्लस 74.84 और ये सारा ऐड हो ऐड जाएगा, हो जाएगा, ऐड करो, प्लस ये सारे 18.92 सॉरी 1181.8 9 EDUC2 प्लस इन तीनों 98.04 EDUC3 3 प्लस 184.19 EDUC4 EDUC4। तो एक टिकट में 2 मजे तो होते हैं, यहाँ एक टिकट में बहुत सारे मजे हैं। एक मॉडल एस्टिमेशन से इनफैक्ट यू हैव एस्टिमेटेड सो मेनी मॉडल्स। हमने सिंपल इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप रिसर्च में आगे बढ़ते हैं तो फिर ये सारा कुछ आप करते हैं। So this is for male urban. Similarly, you can calculate female rural. Male रूरल भी कर सकते हैं, एक और मॉडल बन जाएगा, नोट कर लें, बस घर जाके प्रैक्टिस करें। मेल रूरल, फीमेल अर्बन, ये आ जाएगा मेल रूरल, फीमेल अर्बन, इसी तरह फीमेल रूरल, हाँ फीमेल रूरल भी हो सकता है। तो वो आप वैल्यूज जो है वो कोड जो है वो आप पुट करेंगे तो आप मॉडल बना लेंगे। तो आप मुझे बताएं कि एक मॉडल एस्टिमेट करके जब आपने ये कोई 6-7 मॉडल एस्टिमेट करके अलग अलग से इंटरप्रिटेशन कर दी तो वो आपका रिसर्च जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सर जबकि अभी हमने इसमें एजुकेशन की एक लेवल जी अलग-अलग अभी इसको भी लेंगे तो और अभी थोड़ा सा मॉडल 3 पे नजर दौड़ाए।
ماڈل 3 پہ دیکھیں، اس میں میں نے یہی وہاں پہ یہ حرکت کی ہے. یہ ماڈل 3 اس کو دیکھیں. ایجوکیشن میں ایجوکیشن میں نے ہر ایجوکیشن کیٹیگری کے ساتھ میل کو ملٹیپلائی کیا، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا کیا پرپز ہے، یہ کیوں کر کیوں ایم ہی ملٹیپلائی کرنے، ایسا نہیں، اس کے پیچھے پرپز ہے. When we are multiplying each education category by male, it means we want to compare the wages of that particular education category across male, female. میل فیمیل Male, female with higher secondary school. Is there any difference of wages? Male, female with degree یا undergrad level with the same education. Is there any difference of wages? Male, female with MSc and higher education. Is there any difference of wages? اس ماڈل کا یہ پرپز ہے. یہ نوٹ کر لیا تھا پہلے، جی جی سر جی. اس کو میں مٹا کے تاکہ آپ کلیئرلی اس کو دیکھیں کہ یہ کورس کیونکہ سب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ فائنانس نہ آئے. تو اس کو آپ دیکھیں غور سے، ہر ایک کیٹیگری کے ساتھ، ایجوکیشن کیٹیگری کے ساتھ میل کو ملٹیپلائی کیا گیا. اگین ملٹیپلیکیشن آف ٹو ویریبلز، ٹو qualitative variables, the interaction terms of qualitative variables. سر اس کی انٹرپریٹیشن تو تھوڑی سی بتا دیں سر، وہ جو انگلش میں آپ بتاتے ہیں لیکن دیش میں مشکل ہوتی وہی ہوگی ایگزیکٹ ایز اٹ از سی میں وہ فیمیل کا ہوگا آلریڈی. فیمیل ہے 37 ایڈ 683. ہاں اوکے بیٹا ناٹ. ہاں ٹائم ہمارا شارٹ، چلو اتنے میں ریکارڈنگ ہو جائے گی. Welcome back to the third video related to graded activity. As I promised to estimate all the three models, this model 1, 2 and 3. So we have already done the first two models, we have estimated and we have discussed their meanings and important implications which can be drawn from the results and the resultant outcome of the estimated model. Now we will move on to model 3. Now this is model 3. I estimated model 3. First I will show you how to estimate the model and then we will be discussing the estimated results. So this is model 3, the general model. First equation indicates the general model and the second equation is after the estimation and the incorporation of the results and the values of the coefficients which are estimated using p-values. First I will estimate this model. We will go to, since just for time saving I have already constructed this model in eViews. I will show you just the estimation process. This is how to write the equation in eViews. Quick estimate and then copying the variables and then putting status between the pair between the two variables, each set of the two variables, which the coefficients of which will be known as the coefficient of interaction term. And when I press OK, these are the results. I copied these results and pasted here in our MS Word sheet. So these are the results. Now I will place in front of you these results and then I will be discussing each of the coefficient, including the coefficients of the interaction terms and the individual variables. So starting from پہلے ان کی ڈسکشن ہوگی. جی the یہ پرپز یہ تھا، intercept. یہ انٹینشنلی ایسا کیا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹریکشن ٹرمز آخر میں ہوں.
पहले भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही मॉडल के अंदर अगर है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी इंटरप्रिटेशन पे If आप you वहीं look से at start the कर सकते intercept, you see the coefficient or the intercept or the constant as well. So these are different terms used in our analysis in econometric and the advanced statistical analysis. The coefficient value is 683.65. You can see from the table here. And which represent the base wage for a female worker with primary education. EDUC1, which is used as a reference category. So this serves as the baseline for all comparisons. यहाँ रुके, यहाँ मैंने कहा है कि ये बेस कैटेगरी प्राइमरी एजुकेशन फीमेल ऐसा क्यों कहना पड़ा है? क्योंकि एजुकेशन की कैटेगरी को, हर एक कैटेगरी को मेल से या जेंडर से मल्टीप्लाई किया गया है। उसका कंपैरिजन जो है वो एक नहीं होगा। एजुकेशन कैटेगरी उसका भी रेफरेंस है इसमें। ये फर्क है पिछले दो मॉडल से, ये इस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, आप इसको देखिए। Comparison to follow. So the education variables first. Education category 2, which is the secondary education, the coefficient of which is 16.82. The probability is 0.6802, which is more than 5%. And which is not significant. So secondary education adds no statistical significant difference to the wages compared to the primary education for females. And education category 3, which is the bachelor level, the coefficient of which is 81.69, probability is 0.0763, marginally significant, you can say at 10% level because it is more than 5%, and so the range of 5% crosses. To be exact, it is 7.6%. So bachelor's degree potentially increases the wages for females by 81.69 compared to the primary education, which is the baseline. So you can see the primary education, the coefficient of primary education, which is 683.65. Now coming to the master's level education, the coefficient is 89.94, the probability value is 0.0550, marginally again significant at 5% because it is slightly higher than 5%, to be exact it is 5.5%. So master's degree or the higher adds a potential wage premium of 89.94 over primary education for females. To note down the technical language, which generally is the requirement of the journal publication articles, the publication of articles in the journal, or which is the requirement of the interpretation of results in MS PhD research. The interaction term. Looking at the interaction term first, the education category 2 multiplied by male, the product in product form, the product of the two variables. The coefficient is 37.96 with the probability level of 64.31. To be exact, it is 0.6431, which is insignificant. So no significant wage difference for males with secondary education compared to the females with primary education. Education category number 3 multiplied by male or product of education category 3 and male. The coefficient of which is 87.85, the probability is 0.3094, which is insignificant because the probability is much higher than 5%. To be exact, it is 30.94%. So no significant added wage benefit for males with bachelor's degree compared to the females with primary education. Education category 4 multiplied by male or the interaction term of education category number 4, which is the MSc or the higher level, and male is a qualitative variable again. So this is there again. So all these variables are product in the product form, and all these variables are the qualitative in nature because they have been assigned code 01, the binding codes. The coefficient of education category 4, the interaction term of higher education
and male is 222.68. Fortunately, the probability is less than 5%, which clearly indicates at level 1%, it is highly significant. So males with master's education or master degree or higher earn an additional $222.68 or units compared to females with primary education. So the master degree or the higher degree holder male are likely to earn much higher than female with lesser education and to gain secondary education. So gender male, when you look at the gender, the coefficient is 398.65, probability is less than 1%. To be exact, it is mentioned here 0.000. Just to round it off to the 4 decimal places, otherwise there must be some value if we extend the decimal places. Highly significant, males with primary education, which is a baseline education level in our analysis. So males with primary education earn 398.65 units or 398.65 US dollar more than females with primary education, because all the wages have been converted to US dollar. If you look at the model fitness, 46 point, the R square is 0.4614, so 46.14% of the variation in wages is explained, which is a reasonable number, this indicates that 46.14% of the variation in wages is explained by the cross-section data or the variables included in the model. M statistic is 113.44 with probability 0.000, rounded off to 4 decimal places, probability less than 1%. Highly significant, the overall model is statistically significant, indicating that the independent variables collectively explain very well changes in the wages. Durbin-Watson, again, we are not discussing Durbin-Watson here, we'll be discussing it in a separate video. And if you cannot wait but to watch the autocorrelation analysis, you can watch my videos on my YouTube channel. The general conclusion and the key insights from this model number 3 are the following. Number 1, gender significantly impacts wages. This is number 1. And within this number 1, with males earning substantial premium compared to the females with the same level of education. If both male and female join a job with the same education level, male will be earning relatively more than female, which clearly indicates gender discrimination at the workplace. So higher education levels, education category 3, which is a bachelor level, and education category 4, which is masters and above, exhibit a positive wage impact, especially for males. So again, there is discrimination even with the incremental effect of education or with the improvement of education. If both male and female join the higher education, if they graduate the higher degree, but still they will find a gender discrimination at the workplace. But these effects are weaker. Why? Because the results are not so significant. Because the probability in each of these two cases, education category 3 and 4, the probability is much higher than 5%, which is the benchmark guideline for the purpose of significant difference of wages across different categories. The interaction term for males with advanced level of education, however, is highly significant, which suggests a compounded benefit for males attaining the master degree or higher. So if males are highly educated as compared to female, they will be earning much higher, even if the female are with the same higher education category or the higher degree. What are the limitations? There are certain limitations of results in model
number 3 in this the model which we have been discussed just recently. The potential omitted variable bias or the measurement errors is likely to be there. Why? Because the R square is relatively low. But at later stage we will be incorporating more variables to overcome this issue, because there are two possibilities: either to expand your model including more relevant variables and then re-estimating the model. So that ends the estimation and the interpretation of all the 3 models. Thank you for watching. Allah Hafiz. टीचर देखें हाँ जी जैसे भी अर्बन के साथ थी ना, तो नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है मेल के साथ ही थी ना, पर जब हम इंटरप्रेट करेंगे एट दैट टाइम वी डिडंट मेंशन दैट फीमेल इज अ बेस. हाँ, वो इसलिए कि जब आप मेल को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, जब सिर्फ मेल को, तो उसकी बेस कैटेगरी वो फीमेल है, तो वो इंटरसेप्ट विल बी यूज्ड एज ए रेफरेंस. अगर प्रोडक्ट फॉर्म में तो फिर रेफरेंस कैटेगरी ना सिर्फ एजुकेशन होगी, क्योंकि दोनों डमी है ना, तो दोनों की जो रेफरेंस कैटेगरी है वो दोनों को मेंशन हाँ, करेंगे. इसलिए इसमें आपने देखा होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि with primary education जी जी हाँ. and female with primary education is the reference category, because each education category has been multiplied by male. तो इसलिए दोनों को जब प्रोडक्ट है, चाहे उनकी 4 कैटेगरी है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, कितनी भी, तो इसी तरह प्रोविंसेस में अगर होगा तो किसी एक प्रोविंस को, और उस प्रोविंस के अगर वो मेल कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी है, तो उसका प्रोडक्ट लेंगे, तो वो कोई एक प्रोविंस और फीमेल कैटेगरी विल बी कंसीडर्ड एज. सर हमने सेकंड में भी तो एक प्रोडक्ट दिया है, हाँ सेकंड वाले मॉडल में हमने लिया ना अर्बन और मेल. हाँ, तो वो कैसे इसी compare कोई तो हम मतलब तब भी अर्बन और रूरल और फीमेल इसमें मेंशन करेंगे ना. female हाँ, शामिल बिल्कुल. है। अच्छा ठीक. सर रूरल एक जी जी सर इसमें अब ये डिफरेंस थोड़ा सा, जैसे एजुकेशन जिसमें एक तो हमने ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेल से, जब हम सिंपल ये जो हमने ऐड किए एजुकेशन 2 और 3, तो इनको कैसे फिर एक्सप्लेन करेंगे? ये इनको अलग से, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एजुकेशन से कंपेयर सिर्फ एजुकेशन, ओके, उसमें हम जेंडर को नहीं इंक्लूड जी नहीं ठीक. करेंगे. अच्छा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये एक मॉडल एस्टिमेशन से आप मल्टीपल मॉडल एस्टिमेशन कर रहे हैं, हमने किया था. इस मॉडल के अंदर बिल्कुल इस चीज़ का स्कोप और गुंजाइश मौजूद है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी पिछले हमने करके न्यू मॉडल कंस्ट्रक्शन करके उससे सबसेट उसके ड्रॉ करके आपको वो समझ आ जाएगी कि क्या क्या एनालिसिस इसमें मज़ीद हो ठीक. सकता है. तो ये एक आर्ट है. एक तो आप डायरेक्ट एक ही मॉडल से सारी डिस्कशन कर लें, और अगर वहाँ पे कहीं कंफ्यूजन है तो फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ठीक. मुख्तलिफ वेरिएबल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके ट्रेड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली मज़ीद मॉडल कंस्ट्रक्ट करके फिर कर लें. वो ज़रा आसान हो जाता है. जब वैल्यू पुट करके आप एक और निकाल लेते हैं, फिर एक और निकाल लेते हैं, तो उसका भी Fair हो कंपेरिजन जाएगा. ज़्यादा आसान होता है, और उससे फिर आपके ज़हन में ग्राफ भी आ जाता है. ठीक है, अच्छा इसका इंटरसेप्ट बढ़ गया है, बढ़ गया. मतलब खुद ऐड हो जाते हैं, सही है, सही. तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक. ठीक है, इसको प्लीज़ तवज्जो दें. ये सर. बहुत यूजफुल मॉडल्स हैं. प्रैक्टिस करते हैं हाँ, आप ही वीडियो को देख के. वीडियो तो